ऑलराइट बॉयज। तुमको मालूम है कि मैंने आज क्या किया है? मैं उठा हूँ सुबह 8 बजे। क्यों? ए फर्स्ट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखने। ओह नो। कितना विकेट देखा था? पूरा देखा। मैं अभी रिकॉर्ड करने के पहले तक बैठ के देख रहा था। सो फॉर दोज ऑफ यू वाचिंग, दिस इज डे वन ऑफ द टेस्ट मैच एंड इट रियली टेक टुक मी बैक टू चाइल्डहुड ब्रो, बिकॉज़ दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू. हम्म। Because the one place you want to watch cricket in is fucking Australia. Like the entire vibe, the way the picture quality looks, the ground, the vibe, the ambience, pitch, ये वो एक next level है वो. तो स्कूल का टाइम करता था, फिर बहुत टाइम मैंने किया नहीं, और आज मैं से उड़ गया अंडरटेकर जैसे 8 बजे सुबह को लगा के बैठा है. एंड ऑन वन ऑफ माय फ्रेंड्स ग्रुप्स और समथिंग ना, somebody has said something, so I responded. तो 15 लोग के मैं, hey V, why have you woken up at 8 o'clock? All good. ऑल All गुड। good. ऑल गुड। क्योंकि there's nothing that will get Thakur out of his bed at 8 o'clock in the morning unless it's a medical emergency. That is what everybody is assuming. और अ फ्लाइट? Yeah, flight, work, or like I'm not waking up to work out. I'm not doing. मैं 10 साढ़े 10 बजे उठता हूँ. आज 8 बजे ब्रो 15 लोग का मैसेज, हे ब्रो हाउ कम यू आर अवेक, हे वेर आर यू टेकिंग अ फ्लाइट, ऐसे सब लिखा है. तो क्या गंदा रेप्यूटेशन है भाई मार्केट में. There is early bird who gets the worm, and Thakur is the late bird who gets the late worm, who's also late. या क्योंकि एक बम है, कोई बैठा हुआ है, वो भी सुबह उठ के मैच देख रहा है, बोलता है, अरे आराम No, से मैं उठूं। or I go late, but before the early bird wakes up, I take the early worm. ओह, अच्छा, सो यू नॉट, हाँ, सो योर लेट नाइट इज अर्ली बर्ड्स अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग. और ऐसे हाँ। करता हूं मैं जुगाड़. ओह. Oh, ओह. अरे ओह. ओह क्या oh बात है. no. ओह शिट, आई डोंट नो हाउ दैट जस्ट हैपेंड. बट चलो चालू करते हैं आज का एपिसोड. Hello and welcome to another episode of the Internet Set. So, a show where we take random interesting weird absurd facts as well as stories and we talk about it. और जुगाड़ की बात की है तो जुगाड़ की बात करते हैं गाइस. हम्म। India is not for beginners. This नॉट एट has ऑल। to be this has to be the theme of this episode because आज अपन जुगाड़ की बात कर रहे हैं. तो बिफोर वी गेट इनटू एक्चुअल जुगाड़, तुम लोगों ने क्या जुगाड़ किया लाइफ में दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ? ओ गॉड। I can't. There is one thing I can think of recently. Correct. हम्म. So basically, here's what the issue was. I have a washing machine at home, which is one of those washing machines that goes for a walk. You know, when ओह। when you when it starts कट spinning. कट 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 Yeah, कट. हाँ। yeah, yeah. वो इसको चालू करता ना, वो थोड़ा स्पिन साइकिल पे घूमता है, फिर बोलता है चल मैं अभी फिटनेस, लेट्स गेट द स्टेप्स इन. So I said, fuck, I need to stop this guy from moving, right? How do I stop it? So the problem was it's in one khacha and there's one space on top. So I हम्म। need to pad this space up so that this machine doesn't put on its jogging shoes and gets out. So here's what I did. Okay. So I was thinking कि क्या डाल सकता हूँ, because you can't put something too hard. You can't put something that's like, it's got to be the right thing. So like with all good ideas, they come at the randomest time. हम्म. Okay, so I'm about to go to sleep. It's like 12:30 in the night. Just about to drift off. Suddenly, soup karke, I get one idea. I'm like, oh shit, I got it. So at 12:30 in the night, I have trooped out of my bedroom, gone into the other room, and started hunting for stuff. Okay. And Siddhi hears the commotion. She comes out and she goes like, what are you doing? It's 12:30. And I'm like, no, do you know where our yoga mat is? She's like, you want to do yoga at 12:30? I'm like, just give me the yoga mat. So we find the yoga mat. I take it. It's a rubber mat. So I have हम्म। rolled it up and it's the perfect thing that fits in that khacha that I needed, that pads the machine and the top of the shelf in which it's in. And it's rubber, it's soft, it's thick, it's Yeah, it's going to everything. And absorb the shock. Yeah, it's shock absorbent. You figured out a solution without any money. That is the so biggest win for you here. So like a friend of mine has come home, he has seen it and he's like, ये तेरा storage solution बहुत अच्छा है. I can't believe you gave up an entire exercise and way of life so that
washing machine doesn't go for a walk. I Yeah. think his way of life has improved because before the khad 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 khad, now this is just the peacefulness. This is how he's achieving peace, and that is what yoga is supposed to do for you. Bro, but also, can I tell you, when you hit upon a great jugaad, Huh. okay, there is a there's Pride. immense pride and satisfaction. Yeah, Ki, yeah, for sure. you're not only resourceful, you're also creative. कि Hmm. कि ऐसा मल्टीपल लेवल्स पे तेरे को बूस्ट It's आता a है self pat on the back. या Self, या अरे क्या किया Yeah. यार तूने? I saved money, I fixed a problem, I'm creative, Creative. I use something in the house, so I've decluttered. Like it's You suddenly feel like an urban Bear Grylls. yeah. कि देख मैं सर्वाइव कर सकता हूँ भले मेरी वॉशिंग Yeah. मशीन वॉक पे जाना हाँ. चाहिए. But I totally get what you mean by you get very like happy and proud that you were creative enough to do it. तो मैंने जब BMM में था ना, we used to do a lot of short films, right? Yeah. Now we didn't have any money. You're using a fucking camcorder and all of that. But इतना पिक्चर देखा है लाइफ में कि अरे यार मुझे ना ऐसा एक शॉट करना है. लेकिन at age 18 when you don't have the technical know-how or support, you're not going to be हाँ. able to do that. Like we couldn't do a tracking shot. Okay, if I have to show one character running or walking from this side to this side and I want to follow them throughout, and you do it on a track on movie sets. Bro, guess what we have done? मैं लेट गया हूं एक चद्दर पे. ये चद्दर है. चद्दर पे मैं लेट गया हूं. ओके. और एंड ये वाला पब्लिक साइड चदर का खींच रही चद्दर 4 लोग पकड़ के बैठे और उन लोग खींच के भाग रहे वाइल मैं कैमरा पकड़ के ये हो रहा है. तो हमको मिल गया एक ट्रैक शॉट. और डेविड फिंचर तेरा मूवी देख के बोल रहा है ब्रो ये कैसे किया इसने यार Because ये एंगल तक ट्रैक पहुंच भी नहीं सकता. उसने I कितना नीचे just तक I लिया है. can't understand it. 25 और years थोड़ा of इट business. अपवर्ड फेसिंग सर. यू सी द गाय हियर. मैं इधर नीचे हूँ. नीचे से ऐसे ऊपर दिख रहा है तो तेरे को मस्त पे कि राम गोपाल वर्मा हाँ वो शॉट चल रहा है और ट्रैक हाँ हो रहा है. Yeah. तूने और गोविंदा डच एंगल. गोविंदा हाँ, गोविंदा तूने डच एंगल ट्रैकिंग शॉट लिया है, which is Dutch insane. angle tracking shot as seen in a Ram Gopal Verma movie हाँ. made with 1/900 the budget of what they have. इसने इसने देहरादून एंगल डाला है उधर ब्रो But मेरा हम लोग का फिल्म प्रोफेसर ऐसे देख के बोल रहे हैं वाओ वेयर डिड यू ऑल गेट अ ट्रैक. तो मैं बोला सबसे पहले भाई तू अपनी डिग्री छोड़ दे प्रोफेसर क्योंकि yes, एक because देखने लग रहा है हम sometimes ट्रैक लेके आए. the equipment is a hindrance to actually getting that, because the equipment at that time which would be available to you in your budget would never be able to get you that shot. वो जो इतना low या angle या पे तुझे मिला है. And now you've reverse engineered the shot in your head के नहीं इससे ही काम चलाएंगे हम लोग because वही shot available है तेरे अभी पास. ये है. अभी ये है पिक्चर में और पब्लिक को भी अच्छा लगा. no हाँ. like one of the things, right, like even when we were in Europe, one of the things we realized about that, like the reason why India has a word called jugaad, हम्म. right? Then one of the reasons for that is because in the rest of the world they have all these safety standards, they have all these, like, there's a piece of equipment for every job, there's a person Hurdles for to execution. They're actually hurdles to execution. they have like standardized processes. Like अपने इधर तू creative बन थोड़ा वले 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 कुछ अलग. Bro, it's funny you brought out because Jugaad, by the way, Jugaad is, if you had to do a description for non-Indians, Jugaad is basically a non-conventional frugal innovation in the Indian subcontinent. Okay. Hmm. Involves innovative fixes and simple workaround solutions that bend the rules or resources that can be used in a certain way. Now, you'll be shocked to know that Jugaad is actually increasingly accepted as a management technique yeah and is recognized all over the world as a form of frugal innovation, especially in Southeast Asia. Oh. yeah it's that classic this thing, dude, the classic anecdote of the Americans spent $100,000 no $100 million to create a pen that is anti-gravity, and the Hmm. Russians just use a pencil. Hmm. It's- No, and then Indian wrote "Made in India" at the end of it. Yeah. वो वाला होते थे ना. वो वाला joke. रशियन लोग अप्सरा पेंसिल लेके जा रहे हैं ऊपर स्पेस में. Like yes, the first Indian pencil to make it to space, Apsara. Bro, by the way, there is क्या बोलते हैं, there's one American version of this. It's very funny. There's a subreddit. Okay, it's called Redneck Engineering.
जिधर पब्लिक यही कि how can I put a hanger and a rope and make a tripod? हाँ, Yeah, yeah, yeah. correct. Dude, एक था मैंने वो ठाकुर को बोला था and Thakur was shocked and actually it made sense. So the problem when you're trying to get a stable shot when you're doing move like Oh handheld yeah, shots, so yeah, yeah. it moves. So this guy figured out he can put a small 4K camera on the head of a chicken because the chicken head never if you आगे Yeah, पीछे stabilizer. कुछ भी करेगा हाँ वो अपना Like a बॉडी जैसा gyroscope. करता है उसका लेकिन हाँ it's a proper 5 axis Gimbal. gimbal for a and it's just you've got and वो उसको पकड़ के skateboard पे घूम रहा है so now he's got all his sliding shot everything perfect वो चिकन को पकड़ रहा है. हाँ तो उसने मुर्गी को पकड़ा है मुर्गी के सर पे 4K कैमरा हाँ. है एंड But guys, can you imagine? Can you imagine? ठीक है, you go to Croma and you say कि मेरे को गिम्बल चाहिए. तो ये एक वो हाँ निकालता है. ठीक है, नहीं नहीं सस्ता वाला. तो फिर वो एक और रहेगा. नहीं नहीं इससे भी सस्ता. फिर वो एक सेकंड. And then you hear. हाँ सर ब्रॉयलर चाहिए Bro, so imagine on this movie set you've used the chicken, okay, as a fucking gimbal, and then you've gotten the good shot. Scene is done. He's like, okay, lunch. You pass your camera equipment. Yeah. क्या भाई, ये और मूवी का बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बहुत कम है. और लंच के बाद सब लोग बैठे अरे गिम्बल निकाल अरे अरे गिम्बल तो खा गए तेरा 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 डीओपी और तेरा सेट का खाना बनाने वाला सेम है. अरे डीओपी कहाँ है, उसको तो खा गए हैं. Fucking hell. But I actually saw because अपन जुगाड़ करने वाले थे. I saw few like fun hacks. Okay, one of them I saw that कितने बार अपने ये बनाते अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गया ना कौतुक ये याद रख. हम्म तो अभी अपन कोई ग्रेवी वेवी वाली सब्जी बनाते हैं. Have you noticed like there's that layer of oil on या top? No matter how many times you will tell your help कि भाई इतना तेल मत डाल. अरे भैया उसके बिना टेस्ट कैसा आएगा ये वो. तो ऐसा ना तेल फ्लोट होता है ऊपर बहुत बार. And even though the food is tasty, that thing you look at, you're like, fuck, bro, so much oil going in my body. ये वो नहीं चलता. हैक, जुगाड़. मैंने एक मौसी को देखा करते हुए. तो शी हैज टेकन अ बिग ऐसे पतीला टाइप. उसके लेडल अंदर उसको डाला है आइस हाँ उसके ऊपर. सो द पतीले का बॉटम इज नाउ फुल्ली कोल्ड. दिस इज योर ग्रेवी. तो उसके ऊपर वो पतीले का ये ऐसे घुमा. ऑल द ऑयल गेट स्टक. It What? is so it solidifies the insane. oil solidifies so you just Solidifies and remove gets it like a stuck. papad and then you do it again और ऐसे 2-3 बार कर तेरा सब ऑयल खींचेश. Oh, I don't My know. mind was blown. I Really? said, भाई ये अगर तू जाके because that's the other thing, right? People feel like oh इसमें बहुत तेल है, नो हेल्दी नहीं है, मैं रोड साइड का नहीं खाऊंगा ये वो. अगर ये सब लोग ऐसा करने लग गए तेरा सब खाना एकदम Yeah, दिखने में हेल्दी लगेगा. टेस्ट में I, कैसा है पता नहीं. I want this to happen in McDonald's. कि एक मस्त ऐसा one batch of fries has been made. तो सब तो फ्राइज ही चिपक जाएगा उससे फ्राई जाए. यू हैव कुछ बचेगा नहीं बस तू अभी पेपर का वो कार्डबोर्ड खा बैठ के उसका बहुत हेल्दी. पैकेजिंग अरे उसमें भी कौतुक तेल इतना घुसा हेल्दी कैसे होगा हो गया. हाँ मैं आजकल पेपर खाता हूँ. अरे क्या बात है. अरे This वाह. this is another thing that happened to us recently. I don't know if this qualifies as jugad or it qualifies as life hack or what, but it's probably overlapping. So हम्म here's what happened. Okay, so I had lit a candle, a small candle. Someone had gifted it to us, so I lit it because vibes. हम्म. Now what happened is Siddhi had come home and हाँ she saw it. I just extinguished it, so the wax was still liquid. So she sees the candle and she's like, "Oh, new candle!" And she picks it up. Okay, it was hot. So हाँ immediately she drops it. Right now, there is wax that has hit the floor, right? And it's just jump out onto the marble. Right now, so and as soon as it hits the floor, gets jump out and it becomes hard. Right? Hard, yeah. Now shit. Now what to do? So Siddhi has gone and got one spatula and she's trying to like scrape it off. Okay, but it's like incredibly ineffective. So we're like, fuck, what to do? What to do? So we looked it up online. Okay, here's what you had to do. So we got paper towels, okay, like a paper napkin. Hmm. Okay, put it on the wax. Then got an iron and just ironed the paper. The Oh. wax melted and it got stuck onto the paper and you just peeled it off. ओ It's मुझे so लगा you तूने can उसको अब फिर उसको मेल्ट करके तूने एक और कैंडल बनाया Right. So the other thing you can do is you can get boiling water and just pour it on the thing and then just mop up the water. So ओ Crazy. ओके life नाइस hacks. Life hack. Right. Bro, one thing I saw farmers are doing, okay. So now one is you can do drip irrigation. मालूम है ना, where certain
crops, plants, etc. need periodically water to keep going. You can't be like, चल अभी 2 दिन के बाद डालता हूँ. So now you can get one system that helps you do drip irrigation, which might be a little costlier. तो अपने फार्मर्स ने बोला ये सब हटा, ये सब नहीं चाहिए मेरे को. लिया लकड़ी, ओके, लकड़ी को ऐसा डाला है. So you have something that stabilizes. फिर पानी का बॉटल लिया है, उसके ऊपर खड्डा किया इधर कैप के थ्रू, उसको किया है उल्टा, इधर से काट दिया है और इसके अंदर पानी भरते और यहां से ना वो टप 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 ड्रिप करते हुए जाते. Hey. किल मैं करने वाला अपने एक झाड़ में इधर अभी है, क्योंकि मैं देखा, मैं भाई ये तो अच्छा आइडिया है कि हाँ. you know, if you're not there at home, you're out, because if plant owners nowadays, right, when you leave, one of the first concerns we have is, अबे झाड़ को पानी कौन देगा, अरे फैमिली नहीं आ पाया, घर पे हेल्प नहीं आ पाई तो क्या होगा, ये वो. तो वो डाल के जाने का भाई, अभी उल्टा बिस्लेरी बॉटल, ठप 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 पानी गिरेश, झाड़ खुश. There's a traveling hack that I found for the train. So you know how You take sometimes the you flight are, instead. Is yeah. that No, no, but this is for the sleeper. Sometimes you're like, देख मेरे को एक प्रॉब्लम होता था when I used to sleep on the ऊपर वाला berth. मुझे डर लगता था मैं रोल होके गिर जाऊंगा. Yeah. That was a big fear of mine. So this guy has found a solution by just doing this. What is So it? now there's a third seat. Well, what has he put there? He's put gunny rope. Oh. So now that's become a separate thing. So अगर चाहिए तो now he's created a hammock basically. And now he can just put another gadda and just that's his thing. No, that's great for them who are on the top berth. But what Yeah. about the middle berth, who's going to be sleeping under another person's ass the whole time? And what about the lower berth who can't get up and has to always just walk hunched because somebody is hammocking above him? I feel that is fine because that one person who's gone up on that berth is better than that person sitting next to you on your chair because उसने double ticket खरीदा है. Ah. So I think this is a solution that is helping everybody. Bro, if fuck, I just remembered COVID के टाइम पे, हाँ. right after the end of COVID, 21, 22 के इस पे, तो होली आ गया था. तो Correct. पब्लिक पे होली कैसे खेलेंगे भाई? होली में तो सबसे लीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग होता है. तो सम पीपल हु आर सच होली फैंस कि नहीं भाई हम तो होली खेलेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ. तो हमें घर पे जब पेंटिंग होता है, एक पेंट रोलर आता है, हाँ. तो पब्लिक खुद लेके आया है पेंट का डब्बा, उसके अंदर जो भी कलर वलर डाला है, वो पेंट रोलर लिया है, उसके ऊपर एक और ग्रिप लगा है, सो इतना डिस्टेंस वाला है, उसको डाला है और ऐसे 6 फीट दूर से ना एक दूसरे को अरे होली है. This is the worst Nerolac commercial. No, but like, how badly do you want to play To play Holi? Nice. Huh? Nice, 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 But nice. this one is great, and there's some pictures also of it. Also, Yellow during the color lockdown, line. when we are washing our hands, God knows how many times a day, you really want another reason to again have a bath. All because Holi was more about how to clean yourself. I spent more time cleaning myself than actually playing Holi. There was this also, like during COVID only. There was a jugaad that they had done in a hospital because at that time, if you remember, the oxygen cylinders were very few. हाँ. So what they had done is there was one cylinder. So they had taken a doctor's stethoscope, okay, and used the two ends of the stethoscope to give air to two different patients. Oh, the one that go in your ear. तो वो हटा के, Oh, nice. bro, crazy. Nice, bro. In Tamil Nadu, a guy has created a robot. Okay, that robot stands in line at the liquor store to go get daru for the guy. It's let me see. Adat देखो मैंने भेजा. If you can put that picture, put it. It's literally कोविड के टाइम पे सब लोग खड़े मास्क बीस लगा के, इसने बोला मैं नहीं जा रहा, रोबोट जाएगा. तो एक 2 व्हीलर रोबोट गए लाइन पे खड़े हाँ, होके. देख मिला को. हाँ, बस let me get it. हाँ, but this is insane, dude. मतलब अगर देखो लाइन में, but the application is not just for daru. The fact that he's used it for Anything. daru is bad. हाँ, but it's like this is insanely good application. You could use it anywhere. In fact, like if you think about it, the most amount of jugaad we do on a daily basis or at least weekly basis for me is हाँ. giving my laptop enough height
so that it matches my eye line. तो मन में इतने सारे बुक वो अपन कितना यूज किया है ब्रो कोविड के टाइम पूरा वो अगर इनफ चीजें नहीं है तो लाइट को इधर टंगाया है हैंगर के साथ माइक को इधर डाला है चेयर को इधर डाला है ताकि वो बैलेंस हो सके Yeah. अभी तक चल रहा है 4 Yeah. बुक है मेरे लैपटॉप के नीचे Yeah, there's I found so I was using a book for the podcast all that because Hamisha. Then I figured out that this is something I should invest in, and I got a cover that becomes this origami stand-up problem. That it fixed my problem. But तब तक मैं complete works of William Shakespeare पे पूरा podcast चल रहा था for years. And this is our gentleman standing in that. It's just the acceptance of the people around कि ये है देखना life. कैसे खड़ा है रोबोट Dude, this is insane. But yeah, I would send this for a lot more like ज्यादा than that. I think all invention comes in from some form dude, of random necessity and it ends up not being used for that ultimately. But अरे इसने दारू के लिए बना है. there is you know that what that was? there is हाँ. that saying ना necessity is the mother of The mother invention of invention. है ना ऐसे कुछ तो Thakur, you हाँ. know what that was? So there was a Pixar film called Wall-E. वॉली This वॉली is called Telly. टल्ली अरे बाप पिक्सार को बोलते कि एक robot दारू पी के घूम रहा है सब alcoholic लोग. robot. bro, Daddy. so much like and I think a lot of the jugaad also came when like necessity is the mother of invention is correct right you were put in an unprecedented time and in history where we had not experienced something like COVID social distancing etc and there were so many small problems that you couldn't just go out to the market and solve it so you had to come up with तो I don't know तुम लोग के बिल्डिंग में हुआ था कि नहीं बट लिफ्ट है ठीक है one of the biggest thing was हम लोग जाके उंगली दबाते हैं and remember during COVID it became a big thing कि don't touch surface don't do this don't do that हाँ. तो इन्होंने थर्माकोल लिया है लिफ्ट के बाद नहीं अपन तो ऐसे भी करते ना ये एनी अदर बॉडी पार्ट दैट इज नॉट योर फिंगर नी भी वो सब भी किया राइट बट इट इज नॉट इजी यू आर स्टिल टचिंग सम पार्ट ऑफ इट सो दे हैड द लिफ्ट का बटन्स और उसके बाजू में एक थर्माकोल चिपकाया है और थर्माकोल के अंदर 50 Toothpick. टूथपिक है तो हाँ. टूथपिक निकाल टाइम डाल और टूथपिक तेरी को वापस डाल दे और चिपका दे. ऊपर जा एंड जस्ट होप नोबडी एल्स हैज टच दैट टूथपिक अदरवाइज योर सेफ्टी नहीं या तो तू टूथपिक से दबा और फिर लेके जा घर पे फेंक. मुझे क्या टेंशन है मालूम में पब्लिक दबा के थोड़ा दांत में अरे खाना है, छी फेंक और दे, फिर वापस. फिर वापस दे। Also, to take a random toothpick and to have the gall to put it in straight in your mouth. You never know. Yeah. Dude, during the World Cup final, Hmm. the 50 over World Cup final, man, that was jugad. 50 over World Cup final, Ahmedabad, when you announced tickets released, tickets sold out. Immediately after tickets, what was sold out? Hotels sold out. Oh shit. अभी मेरे पास टिकट है पर होटल नहीं क्या करूं Hmm. तो पब्लिक जाके हॉस्पिटल बेड बुक कर दिया हाँ bro, I अबे remember याद this. है मुझे. हाँ. I remember this. हॉस्पिटल बेड लाइक व्हाट आर यू इन फॉर अरे मैं वो कोहली का इनिंग्स देखना है वो ये मैच हारने के बाद जो मुझे शॉक लगने वाला है ना उसके लिए मैं पहले एडमिट हो रहा हूँ एडमिशन Dude, एक है. So the thing is, like, we always are at odds with our parents about, how they handle electronics. And we all made fun of Gopi Bahu. याद है तुम लोग को Gopi Bahu? who was washing the laptop Who was washing the laptop. So this one dude is making fun of his dad for washing the USB का wire, the charging cable. what So he's sitting and washing the charging cable. hey but I Because- agree with this I'm this गंजी wearing What dad you wash your Yeah, No, and the no. thing is, ऐसा नहीं कि साबुन थोड़ा वो लगा है because dust लग गई थी तो the father is nonchalant. He's like, you are insulting me, but I'm going to make you eat your words. So the father is cleaning it. ये काला हो गया है, ये हो गया है, and he's done a पूरा पानी के नीचे घुमा के, and then he connects it to his phone to or just. explode. Oh, fuck. This. oh no we have to watch this again हाँ नहीं. Is it So going this to guy, fucking and burst? then he's testing it. Yeah, he's testing it. I'm so scared that it's gonna burst the phone. But nope. बाप होता है, बेटा होता है. Yeah, just shows you how robust androids are. tat, 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 tat. But
I'll tell you why I'm on the side of uncle over here. हाँ A, because I'm a father now, अच्छा and I am slowly gravitating towards becoming a Ganji wearing man. क्या Second reason, okay, is because uh, the 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 white wires, right, over time, because we live in a dust bowl, the Hmm. white wires over time become dark gray, and it looks fugly. And like you try to clean it with like a cloth or whatever, and it just doesn't work. So I have had the urge to do this, but I've also not had I've had the like Kautuk, No, please but don't go around fear. washing your no, electronics. but the confidence that the father had, because there is no way in hell this should technically work. He knew it would work, देख like for a सच सच certainty. नो 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 अंकल कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे अंदर से फटरी तो थी उनकी लेकिन नाउ ही हैड कमिटेड एंड ही वाज इन टू फार तो इज लाइक भाई अभी मैं अगर चल गया तो मेरे बच्चे मेरे को मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मैं कर ही लेता हूँ और कर No, correct है, correct है. आप आगे बढ़ो सर, हम तुम्हारे साथ हैं. Yes, uncle, we are getting there. It's a race and we are getting close to you as fast as possible. अच्छा अच्छा, अभी अंकल वो है ना फोन के अंदर ना इधर कितने बार बहुत मिट्टी जाती है तो थोड़ा उसको भी धो के देखो ना कि कैसा है उसके फोन चलता है क्या आपका और फिर मुझे बताओ Good. अच्छा तो एक हाँ, हाँ good, बता good, good. नहीं. नहीं नहीं That नहीं to say phone hacks and all. There's a lot of those, where there are products now that have been invented specifically to prevent jugaad. For example, how many times has that happened, right? Where you put Oh, you mean iOS? no. I'll tell you what I mean. So sometimes there are these plug points, okay, हाँ which are placed in this unbelievably mathematically annoying place, which is yeah just far enough from your bed and far off the ground you can put your charger in and the charger doesn't reach anywhere, right? It just dangles. So people obviously used to put the phone on top of the charger, put the वो तो phone on हमेशा top of the thing, ऐसा ये वो. चार्जर है तो उसके ऊपर ऐसा फोन रख ऐसा के फोन है, फिर बैलेंस. बोलते हैं भगवान भरोसे रक्षा करना मेरी फोन की Yeah. yeah So that. But now on Amazon, you can find a product which basically is a you attach it. It attaches onto your charger. You put the charger in the socket, and it basically बिकॉज by द that बेस it gives you one tray in which you put your phone. हाँ तो तेरे को ये or balancing act नहीं करना पड़ता. or you can get this. What is this? Guys, this is my charging cable, okay? Okay. Oh, I see what you mean. What a cheap magic trick this is. Dude, I have a 10-foot long charging cable Charging cable. because if I connect it anywhere in a room, it can reach me. You can you know attach you it know in what they another say room. about people with long charging cables right Yeah, I'm trying to compensate for my short penis. wow other other I tried so hard to not use the word Funny. my penis This is how I impressed my wife, guys. She was like, bye, bye, yeah. She asked me for a charger one day. Her phone was dying. I said, oh. but she had to go to the next room but she's like No, hey can I take it? You're like, no, you'll charge from here, but you'll still get it. और तो उसको खींच के थे and अपन then बोला other भाई has pulled out the whole thing. Okay, and then she has looked at it and said, नहीं मेरे को वो पतली पिन वाला पतली पिन वाला charger चाहिए." अरे भाई हमारी शादी ऐसे हुई थी हम दोनों का शादी बांध ऐसे ऐसे बांधा था हम दोनों चार्जर को चार्जर साथ में बन के चार्जर से बांध और फिर हमने फेरे लिए वो इनफैक्ट ये मैंने देखा ये एप्पल वॉच का है ना उन्होंने मैंने एक देखा था तो इसका चार्जर है ठीक है चार्जर यू पुट इनटू द वॉल चार्जर से वायर निकलेगा वायर यू पुट थ्रू दिस Oh my या God. दैट इज एन एक्चुअल डिजाइन थिंग and then it hangs ऐसा है and I'm like fuck it was right there this whole time and I didn't realize that you could do that I didn't knew it. I didn't knew आई it डिडंट न्यू इट अच्छा एक तो मेरे से गलती से वीडियो दिख गया था तो तुम लोगों को दिखाई देता हो ये भाई ने बहुत क्या एपिक शेविंग फोम से नहा रहा है? नहीं ये शेविंग फोम नहीं है ये ये क्या प्लास्टर है? ऑफ पेरिस है What this is a Nayak outtake. yeah so this बेरियम guy क्रिप्टन आर्गन हीलियम this guy is साफी actually सदा bathing with atta Oh. and then because he couldn't afford a fishing rod and a fishing rod is too slow Oh my so God. he's covered himself in atta and he's Oh, jumped into the river bro, I'd be amazed if this so happened. then he becomes a roti and then fish come to eat the roti and he catches them what is Yeah.
That is what's happening. And the Oh. fishes are coming in and biting at it. And what he's done is he's slowly putting his shirt up and they're getting into his shirt. तो उसने शर्ट को नीचे करके पकड़ लिया उन लोग को. अबे And he's caught like 8-9 massive fishes. Oh, bro. Wow. मतलब just completely rendered the entire concept of fishing useless. oh my Wow. god, that's unbelievable. That's a great one, bro. But To can use you yourself as bait. one But second, पहले तुमको आटा गूंदना पड़ेगा. That is the problem. bro, if he just puts besan, then your fish is also ready. हाँ, अमृतसरी तो तेको वो लगा अगले वो बार अपने थोड़ा आप को लाल बेसन में- डाल के मच्छी पे और फिर तेल में कूद जाएगा वो, तेल गरम में भी तेल कूद में जाए। जाके। ब्रो वो क्या फिश ये होगा फिश Prawns कोलीवाड़ा. बहुत कोलीवाड़ा फिश कोलीवाड़ा पूरा उसके साथ अबे थोड़ा तू- आदमी का भी टेस्टर है नहीं वो तो आदमी वो आदमी बेट है वो कोलीवाड़ा। बेट है ये सुरमई सुरेश क्या होता है? सुरमई सुरेश इज ग्रेट या भैया एक सुरमई सुरेश देना एक मिनट सुरेश गया है सुरमई लेने अच्छा ओके ठीक है तो एक महेश मैकरल दे दो नहीं महेश भी गया है हाँ, प्रवीण पॉम्फ्रेट वो है प्रवीण पॉम्फ्रेट Imagine the last thing that the fish sees is his chest hair. या नहीं वो तो देखा ही नहीं है ना क्योंकि आटा है नहीं हाँ। अंदर घुस गया ना टी शर्ट के. अच्छा हाँ वो अंदर भी होगा ना नहीं भाई सुनील सुरमई You know something other when you showed me that video, if you had paused and you had asked me, what do you What is think, about to man? happen? Why is Arey. this man doing this? I would never have guessed fishing. Yeah, I didn't think so. I didn't that the eventual outcome of I thought it was a haldi ceremony and he's a very lonely person. मैं अपने आप से शादी कर रहा हूँ। he's so lonely. His haldi is not yellow; it's white And he has to put it inside. himself. हल्दी लगे मुझसे पिया सजे. Other top class. This Top is class. these men. They and I found so when you want to run out of school, you know when bell बजता था वो 4 बजे स्कूल का, you know you want to be the first one out. And that's the whole idea. Like you're the first kid out of school and like school खत्म हुआ निकलो यहाँ से. तो रशिया में they found a great solution to this. So this guy और बाप रे. just jump out into the snow and walk away. Niet. I just do this because I get lit. What the hell, dude? वो 5 माला कूद के बस निकलो चलो मम्मी घर. Other 5 माले से गिरने के बाद चल भले स्नो हो कुछ तो होगा ही इज वॉकिंग अनस्केथ लाइक ही जस्ट गॉट अ ये किया डस्टेड द स्नो ऑफ बाउंस. If it's fine snow नहीं फर्क पड़ता इतना. You just अबे go. but हाँ. can you imagine the तू 5 trauma? माले से गिर रहा है भाई. Thakur, can you imagine the trauma of the teacher Yeah. when the bell has rung and the Okay, student bring your climbed homework up for and tomorrow. jumped Next week, out this of is. the- No, she sees a bunch of kids just thap and she just like एक गया दो गया. Where everybody going? They're all jumping. Sorry, syllabus changed. No homework for you. I feel this is a one and done. I think only one student gets to do this because if more than one jump, तो वो दूसरे पे गिरने वाले हैं. So either one guy gets out of the way, but otherwise वो खड्डा बन चुका है. So now more than one can't jump. He's already disturbed the snow. So it's only Yeah, the no, first so one who that's what they manages to tell the get teacher. Ma'am, even if sir you want to go home early, you can also do this. But because 50 students have already jumped, अभी उधर खड्डा है. Teacher भी okay, I jump. अरे oh shit, no snow. Vladislav is no more. Man. और सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं अरे कल होमवर्क नहीं मिलेगा व्लादिस्लाव मर गया. ब्रो मैंने एक फोटो देखा क्योंकि अपने इंडियन जुगाड़ में ब्रो इट इज नेवर एंडिंग. इवन द मोस्ट बेसिक थिंग इज अ जुगाड़. लाइक बचपन से अपने को प्रॉब्लम था ना रिमोट. अरे यार रिमोट नहीं चल रहा है जाओ बैटरी लेके आओ. तो किसी ने अपने घर पे एक लंबा लकड़ी रख दिया है. सोफे पे बैठता है फिर वो लकड़ी से मैन्युअली टीवी पे वो ना पहले वाले टीवी आते थे देखो मालूम था चैनल बटन का दबाना बटन टीवी पड़ता पे दिखता है. आजकल के टीवी पे नहीं है कुछ बटन बिटन. सिर्फ तेरे पास फोन पे या एक्चुअल रिमोट राइट. सो दैट ओल्ड स्कूल बटन वाला होता है वॉल्यूम करने के पब्लिक ने वो रखा है.
ठीक है, फिर एक के घर पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्लॉक, तो तेरा 12 to 6 है, लेकिन हाँ क्लॉक गिर गया था तो आधा टूट गया है, तो 12 to 6 उसने वापस चिपका दिया, और बाकी वॉल पे ना 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bob, because the one arm is still working, so he's able to guess what time it is. Able to guess what time it is. बट इन केस यही यू हैव टू कि मूव मैं नया लेके आऊं, द नहीं क्लॉक, नहीं इट्स भाई, जस्ट इस सब का टाइम नहीं है अपने पास। एक, but I don't get the thing, you know, it's very frustrating that there are no buttons on the TV anymore because I miss the accessibility of a on How and off many times button. did you use it, Because Adarsh? एक बार, because dude, लेकिन वो एक बार मेरा रिमोट गुम गया था, okay? Now we want to switch off the damn TV. The TV is on. We can't figure out how to switch it off. अभी उसका जो बट अभी उसका ना मेन्स, यू अज्यूम के वो मेन ऑफ कर दे, मेन, बट मेन भी टीवी के पीछे है ना, तो वहां पे हाथ घुसता नहीं है क्योंकि वो दीवार से चिपक के सट के लगाया हुआ है, तो यू वी कुडंट फिगर आउट हाउ टू स्विच ऑफ द टीवी। तो फोड़ दिया सीधा एक नहीं पत्थर नहीं, लेके हम लोग ने, अरे नहीं, फ्यूज फ्यूज ट्रिप किया हम लोग ने। Oh, तू घर पे जाके अपना एक फेस बंद किया है। हाँ, और क्या करे, आप रहने देना यू चालू। ट्रिप इट। अबे लेकिन पूरा दिन टीवी कैसे, वॉल्यूम भी नहीं, चेंज सही नहीं है, कर सही है. सकता, कुछ नहीं कर सकता, इट्स नॉइजी एज फक, यू वांट टू डू समथिंग। बैटरी बैटरी नया रिमोट कुछ तो, टीवी को अदर निकाल दे वॉल से। अबे जब तक रिमोट आएगा 2 दिन का पीस तक आई कांट सॉल्व इट, या तो नो, करेक्ट, करेक्ट, या तो मैं करेक्ट. योगा मैट लेके उसमें ओढ़ दूं, बट दैट्स स्टिल नॉट सॉल्विंग द साउंड प्रॉब्लम। या तो तू उसको निकाल के एक बार धो दे पानी के नीचे, सब ठीक हो पानी के जाएगा. नीचे धो दे ब्रो, the only way to lock this car, मारुति हाँ मिस्टर 800 बीन, में एक्चुअली कुंडी और ताला है वो, व्हाट द फक इज but honestly this is the this is the safest way to lock the Maruti, because you know how easy हम लोग स्केल से खोलते थे मारुति 800। हाँ. तो अभी भी खोल सकता है। रूलर का वो जो हाँ लोहे का स्टील का रोलर होता था ना, वो अंदर हाँ डाल, थोड़ा ऐसे ऐसे पतला। करते थे, अपने आप खुल जाता था। हाँ So if this is the door and this is where your lock is, right above that, तेरे को उधर रबर होता है ना, तेरे विंडो के इधर रबर का एक लाइनिंग होता है, उसको थोड़ा आगे ले, पतला रूलर अंदर डाल, ठप ठप मार, यू विल एक्चुअली फील वेयर द लॉक इज, हिट इट हार्ड इनफ, पप खुल जाता है। क्या मैंने भाई, वो अपनी ग्रैंड थेफ्ट सैंड्रो, अंधेरी. हाँ ब्रो जीटीए, चल ओनली रहा है ऑन तुम लोग. 800, अभी आजकल कुछ नहीं चलेगा, ये खाली मेरी वो सैंट्रो खुली मारुति थी 800। ब्रो, हाँ सैंट्रो जेन खोला हम लोग ने, और एक सीएलओ गाड़ी आती है पुरानी, सीएलओ वो खोली है, ओपेल एस्ट्रा पर या कोई के एस्ट्रा करता वो क्या भी। था? हाँ हाँ। नहीं नहीं, वन No, वाज, Varun was only doing this, guys, because उसकी चाबी गुम गई थी, so that is the only reason he was using yeah this for. yeah, and then we started doing other cars that our friends owned, not random cars on the street, just to see कि अरे हो सकता है, और होता है। Challenge. आजकल के इसमें नहीं होगा, या पता नहीं होगा आजकल के इसमें, आजकल के इसमें तो कोई लैपटॉप से करना पड़ेगा, फिर रिमोटली तेरी गाड़ी खुलेगी या। Bro, some guy had recently posted to Reddit saying कि हमारा नल का एक पाइप फट गया था, whatever, तो पानी बह रहा था, तो मेरी मॉम ने ये जुगाड़ किया है. You know what his mom had done? She took a carrot and she goosed it into the pipe. और फिर ऐसे Instead a plant. carrot into the खड्डा। Into the, yeah, just goosed it. I showed you. But did Wow। it sprout? It would have sprouted ना, because उसको तो पानी मिल रहा है, वहां पे मॉस जमा हो रही है, तो it's like a perfect ground for the carrot to grow. रुक रुक दिखाता हूँ, बहुत funny है मुझे वो. I saved it. Here we go. ब्रो लाइक ये देख, एक और देखो दिखा था एक आदमी को स्विमिंग नहीं आती थी, ठीक है, और उसके पास लाइफ जैकेट नहीं था, तो ही सेड फक Sorry. इट। Yeah. Oh, super smart. I like First, that उसने अपने बच्ची को प्रोटेक्ट किया है प्रॉपरली, लेकिन हाँ न चूते, बच्चे पे थोड़ी डाल देगा कोक की बोतल। flotation device. This is that carrot. घुसेड़ दिया सीधा. वाह ब्रो, Moving on. मैं तो नहाते honestly नहाते भूख लगी तो तू चबा भी सकता है। at least now you know कि कौन सा हॉट वाटर टैप है, कौन सा कोल्ड वाटर है। Oh, the red one is hot. गाजर वाला घुमा के तो ठंडा पानी आता गाजर, which is great if you go to मूली घुमा के तो गर्म है, गाजर घुमा के तो ठंडा है।
गाजर मैडम क्यों घुमा रहा नहाते नहाते क्यों है ऊपर से? अरे क्यों, वहां पे वो लेटेस लगा है, लेटेस से पानी आता है तो ऐसे शावर वाला फील आता है, ऐसे सब जगह से अलग अलग पानी आता ऊपर शावर के जगह पे मेथी है, ऐसे कुछ है जो खुल जाता है, है। तो अलग अलग, लेकिन एक एक ड्रॉप गिर रहा है सिर्फ। हाँ तो भाई हम लोग का शावर अरे वो खराब हो गया ड्रिप, तो। हम लोग ड्रिप इरिगेशन से नहाते। आगे रहे। और तेरा ब्रिंजल साफ नहीं हो रहा Oh man, bro, There's like, another one. but so many of the जुगाड्स ना actually happen vehicles के हिसाब से। यार मेरे Yes. पास गाड़ी नहीं है, या मेरा गाड़ी टूट गया, either I'm not able to afford it, or just I'm a creative genius, so I want to fuck around. Hmm. People have done such insane stuff with their own cars and stuff like that. There was this guy ना, he came on Shark Tank. I think we spoke about him. Jugadu something his name was Jugadu Mahesh Ramesh Jugadu something. चेक हिम आउट, वेरी गुड स्टफ ब्रो, वेरी स्मार्ट। उसने खुद अपने पूरा जुगाड़ करके उसने एक बाइक या कुछ इलेक्ट्रिक बाइक बनाया था खुद से। Oh Look, shit. there is a guy who was like, I want to ride a bike, but I can only afford a bicycle. हम्म। उसने क्या किया, एक होंडा सिटी का खाचा उसने निकाला, ठीक है, जस्ट द आउटर शेल, हम्म। he just put it on his bike. हाँ, लॉट ऑफ पीपल हैव डन दैट ब्रो। हाँ, dude, समबडी हैज I've टेकन seen अ somebody. रिक्शा का ऊपर का अपने हाँ, साइकिल पे उसने पीछे से अटैच किया, सो ही नाउ हैज अ शेड, और वो साइकिल चला रहा है मस्त। क्यों नहीं भाई, or you can मजे। do this. ठीक है, This dude has basically decided कि I need my family to travel together, अबे but I गो need want गो them. गो ओ गोलमाल, गो So गोलमाल, गो it's a गो stretch गो scooter. गो। हाँ, इट्स अ स्कूटर लिमोजिन ब्रो। Yeah, हाँ, it's a limo scooter and everybody is comfortable. सब देख, This कोई is डेंजर में नहीं है। सब यूजुअली अपने इंडिया में एक जुगाड़ था कि बाइक पे अपन बहुत करते हैं ना चीजें। तो स्टड, लाइक अ फैमिली ऑफ फाइव विल ट्रैवल ऑन अ बाइक मेंट फॉर टू, विद वन हाँ, चाइल्ड हैंगिंग लाइक दैट ऑन द साइड, वन इन द फ्रंट, वन ऑन योर हेड। तो सबको ये करना चाहिए भाई, सब पुराने टूटे फूटे स्कूटर का बीच बीच वाला पार्ट लेके बना दो। but what I don't understand is this guy ultimately, और किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, एंड में खाली हेलमेट सर के पास। ब्रो हेलमेट रखा जाता है तेरे रेयर व्यू पे, ताकि अगर सामने नाकाबंदी हो तो तू पहन ले। नोबडी इन इंडिया इज वेयरिंग हेलमेट फॉर सिक्योरिटी by और the way, सेफ्टी। speaking of bike jugards, हाँ, so one of the other problems, classic problems of having car bike in India is कि your parking, if your parking doesn't have shade, हम्म। right? तो फिर तू अभी बन गया तंदूरी the minute you enter हम्म, it, right? And bike पे तो doubly this thing because there's no roof also, so your seat is just becoming a tawa, right? So what these guys did is, clearly this was parking at home or whatever, and they were like, यार shade नहीं है, shade नहीं है. So here's what they did. They went and bought a Syntex का drum. You know that giant tanki, ब्लैक that ब्लैक कलर टंकी black ऊपर। color का giant tanki that sits on the top of your terrace. हम्म। Bought that, and they opened one side of it और घुसा दिया बाइक अंदर, अभी शेडेड पार्किंग। ओह, wow. गुड वन। आई सी योर शेडेड पार्किंग एंड रेज यू a bike without an engine, है, but it still runs. वो come साइकिल। on, नहीं ब्रो, जो इंजन अरे, नहीं लगा उसने उसके जगह पे एक ईंधन। कोक का बॉटल। द अमाउंट ऑफ जुगाड़ इंडियंस हैव डन विद जस्ट एन एम्प्टी पेट बॉटल ऑफ एनी सॉफ्ट ड्रिंक Yeah. इज इनसेन। अपन ने उसको इतने अलग अलग वे में यूज किया है ना, इट्स नट्स। किसी so ने this is without a fuel tank, not without an engine. हाँ, फ्यूल टैंक, सॉरी, व्हाई डिड आई हाँ, से, माय बैड। फ्यूल टैंक, फ्यूल एक टैंक। बंदा था जो साइकिल पे चल रहा है, उधर धूम का म्यूजिक चल रहा था, एंड पुलिस वाले ने रोका उसको, एंड देन यू रियलाइज इट वाज एन ओल्ड एवेंजर जिसपे उसने इंजन निकाल के बस पेडल डाल दिया था। तो वो बोलता है, साहब ये तो साइकिल है, क्या पकड़ रहे हो मेरे को बिना हेलमेट के? मस्त। We'll all relate to this jugaad because all of us playing in our building while growing up, whether it's football, cricket, whatever, we've done some sort of a jugaad because we didn't have the actual professional setup, for example. तो क्रिकेट हम्म, में तू या तो तेरे पास स्टंप्स है, वो स्टंप्स नहीं तो तेरे को प्लास्टिक वाले स्टंप्स मिलेंगे, वो नहीं है तो तेरे वॉचमैन की चेयर डाल दिए तूने, वो हम्म। नहीं है तो वॉचमैन की चेयर विथ वॉचमैन डाल दिए तूने एज स्टंप। ठीक है, नहीं बट तो ड्रॉ, दीवार पे ड्रॉ कर दिए स्टम्प। दीवार पे ड्रॉ किया है, बट ये बच्चे ने बोला है छोड़,
किस पे ड्रॉ किया उसने? Oh, He's भैंस drawn it है, on a buffalo. भैंस है। ओश, He's drawn it on a buffalo. तो तुम्हारा पिच बफेलो के मूड के हिसाब से चेंज होता है। बट द बफेलो इज टाइड ना, उधर बैठ के खाना खा रहा है बफेलो, तो तेरे को मालूम है एटलीस्ट आधा घंटा हिल रहा नहीं है, तो आधे घंटे के लिए तेरे पास स्टंप है। अगर बफेलो मूव हो गया तो ग्राउंड चेंज, उसके बाद दूसरी जगह पे जाएगा। एक सेकंड, बट बफेलो बैठ गया तो? नहीं अबे, दैट्स योर यू गाइस आर, अगर बॉल अच्छी आई और क्लीन बोल्ड हुआ तो फिर तेरा तो गेम बजने वाला है। हाँ, तो सोच वहां पे, सोच इफ यू बैटिंग, इमेजिन अ विकेट कीपर इज किकिंग यू कॉन्स्टेंटली। No, एक तो the sadness that you got out, and then the हाँ, second is that a fucking buffalo hit you in the face. yeah. बट दैट सर्व्स यू राइट फॉर गेटिंग आउट। हार्ड एक लात सीधा मुंह पे। That's one way to go back to the pavilion. पवेलियन Yeah. ऑन अ स्ट्रेचर, क्या हुआ, मैं लग गया। You have हाँ, any others, Anand? I have this one where this is not Indian per se, but I've seen it happen in India a lot. It's just I couldn't get a good enough video. It's this whole concept that you don't need to bathe at home anymore. What? You can Wait, just what? go to your barber Oh, and he will take care of everything. That sounds so wrong. No, but dude, this is not like a hammam place. It's just the idea that ये तुम जाओ and ये तुम लोग को ऐसा नहला रहे हैं जैसे what? Why? तो ये हेयर वॉश होगा। But why is this happening? उसका थोपड़ा बाल वाल and oh it's my not the Lord. shampoo दे दो तो ऐसे कर रहा है. It is This the is whole Bro, this guy looks like he's about to go catch some fish. this is head and shoulders and torso and neck and head, shoulders, nose, face. Bro, this guy, the guy who's getting massage looks fake though. Because if also. somebody was moving me so rapidly, मेरा थोड़ा और रिएक्शन होता है, नकली लग रहा है। Dude, this is legit. नहीं बुचो No, उसका he's, मुंह वो खुलता हाँ है. मुंह हिल रहा He's है। stopping for breath. That one girl whose job it is. बट इसमें भी तेरा सिर्फ फेस नहा रहा है, तेरी बॉडी नहीं नहा रही है। But इसने जुगाड़ क्या है, जुगाड़? Bhai, he's hacked the whole. You don't need to bathe before. You just Or go you sit just there. आधे Like he'll घंटे के still लिए ये look आदमी. fresh and well put together as Yeah. opposed to dirty. Yeah, until Why you though? smell him, then you're like, fuck, bro, shower sometimes. और तू ये सब आइडिया मत दे, बाबा ले लेगा भाई। Bhai, the worst one I've seen so far has just been this. This is a jugaad where you think bags are too expensive today. So I'm a make a bag myself. What is that? It's a Oh bag. no, oh He's turned no, his hair into a bag. oh Yeah. no. So if you want to go shopping, you're going to the You just grocery carry this store. kid, just hold No, this kid. no, 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 Thakur, you reached the end of the line at the checkout this thing, and I said, "Would you like a bag for this?" And he was like, "No, I we're have. done, we're done." I'm not spending that 30 rupees extra. 30 रुपीज कौन सी बैग ले रहा है बे? Sorry, मैं लंदन के हिसाब से तू बोल रहा लंदन प्राइसेस बोल रहा है, हाँ वो हूँ. भी है। 30 pence में बैग मिलता क्या है. So 40p? you know how much, Next bag dude, 40p? how much bullshit I have done trying to carry random shit from Tesco back home because I just didn't. Because you go to the grocery store, you want to buy one thing. You know के अच्छा बीवी ने बोला है आज ये खत्म हो गया तो we have to get like अच्छा just one broccoli. But one broccoli के चक्कर में होता है कि अरे पास्ता भी तो कम था तो पास्ता भी उठा दो. अरे वो हाँ कम था थोड़ा टोफू लेता हूँ. अरे ये ब्रिंजॉल बहुत अच्छी लग रही है चल एक एक ब्रिंजॉल लूंगा था. Now I am playing this game of reaching home which is only 30 feet away. That's why you don't take the bag क्योंकि अरे ज्यादा दूर नहीं. But then you realize मेरे को दरवाजा खोलना है. By the तू way, ये सब 30 पेंस बचाने के लिए कर रहा है अदर। अरे because the कितना idea बचा was you तूने, wanted नया to घर put the कब खरीद रहा है, ये 30 पैसे जो तूने बचाए हैं उससे। It's that logic ना कि अरे मैं सिगरेट अगर तू सिगरेट नहीं पीता तो तेरे पास आज फरारी होती. अबे हाँ लेकिन तेरी फरारी क्या है गांडू. funny. But the other, yeah, shopping से याद आया. I'm sure I've said this before on the podcast, but worth repeating in this context of jugaad. Hmm. So we were in Canada. Again, we had gone to one of these outlet malls. And here's the thing. So one is having the commitment to go to the outlet mall, which is out of your way and shopping. And then the other is going there prepared to shop, which is what some of these Chinese tourists had done. हाँ लोग एक लकड़ा लेके आए थे. Okay, they shopped in multiple shops. Now every time you shop, you get bags, right? So here's what they did.
एक आदमी ऐसे पकड़ा, दूसरा आदमी पीछे, और बैग्स बीच में, और चल के लेके जा रहे हैं. सो अमेज्ड. Or they pass by you, you look around, you just cut off the handle of one of the bags, take it, and you exit No, from and the there's place. something so uh, incongruous between two people carrying one lakada and a Hermes bag hanging on that lakada. It's just so okay. It's Hermes, Kautuk. It's Hermes. I've been I, corrected very horribly and Hermes. reproach. listen, Hermes. other Hermes. I am between Hermes and lakada. I am lakada. Okay. So, Hermes. Hermes. Bhai, there's no air in that. When you feel every bit of it, there's no lightness about this. So I don't think air is the right way to say this we bag. could do a whole episode of just three of us trying to pronounce high-end luxury. Yeah. Yes, We yeah, need Bava. Yves We need Bava for Saint that episode. Laurent. Yeah. Vives Saint Laurent. Hmm. So it's not available here. No, but this it says, yes, sir. It's Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Vives Saint Laurent, you will not get it. Saint वाई सेंट लॉरेंट वहां पे अंधेरी में मिलेगा आपको. Bro, स्टेशन पे by the मिलेगा. way, can I tell you something? I have never not laughed every single time I've seen Balmain. हाँ, बालमेन बालमेन. हाँ. बालमेन मेरे को बहुत फनी लगता बॉम है. है. बॉम है. बालमेन. इट इज बालमेन ठाकुर. इट नो, इज एंड द थिंग बालमेन. इज, बालमेन के आजकल ना ऐसे यहाँ पूरा प्लास्टर्ड लिखा हुआ है कैप्स में बालमेन. ठीक है, यू कांट व्हेन यू रीड सी इट, यू कांट नॉट रीड इट इन योर हेड एंड देन आस्क द पर्सन हु इज वेरी गुड, इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स बालमेन. अरे मैं इटली से लिया. अबे चूते, लेकिन नाम तो बराबर बोल. Balmain. बालमेन. Guki. वाइवेस. It's two translations of hair. It's just bal and mane. That's in my head. It's just really What better way to Chagi name clothing than after your hair? yes. But actually, if you notice now, अपने जुगाड़ इसमें now it's not, now it's very commonplace, but like the first dish of जुगाड़ you would see would be your mom. Moms have Always. this uncanny knack, like not specific instances coming to mind, but you see them. उन लोग, my mom doesn't throw anything from the house, nothing. It's always there. Like growing up, also, no, we will repurpose this into something else. So whether it's your container, I mean, it's very base level. It's not some mind blowing thing. But even now, there's always a, oh, don't throw this. I will use it to make something else. Like I had a Diwali गिफ्ट हैम्पर somebody sent, okay. So अभी हो गया, देख के पोस्ट डाल ले, अभी फेंको, अभी क्या घर पे रख के करूं मैं. मेरी मॉम आई थी घर पे, अरे ये फेंक मत, मुझे लिटरली ऐसे वो जो खुलता है ना, ऐसा वाला डब्बा जो खुलता है वो है. नाउ शी हैज मेड दैट इनटू हर मेडिसिन बॉक्स. Arey, the biggest jugaad was that, na, that cookie box that used to have Sui Sui Dhaga. Dhaga. Like it's unbelievable. There's, classic mom jugaad na, which is not which used to happen food wise. I don't know if your moms did that, but Leftover pizza. लेफ्टओवर को मैं उसको पिज्जा बना दूंगी. एक रात पहले सब्जी बनी है, अरे नहीं खाना है सब्जी, डर्टी, मजा नहीं आ रहा है वो. कल क्या बना है? कल पिज्जा बना है. अरे क्या बात कर रहे हैं. और वो पिज्जा ऐसे ब्रेड है, इसके अंदर जो भाजी पड़ी है ना 4 दिन से, सब मेथी डाल मेथी दिया है. पिज्जा. मैंने मेथी पिज्जा खाया अरे है. मेथी और दूधी को क्या बोलते हैं हिंदी में? घिया. दूधी. हाँ, दूधी. दूधी. तू दूधी बोला. दूधी घिया कुछ भी बोल हाँ, सकते घिया, जो भी. हाँ. 3-4 सब्जी उसको डाल दिया है, उसके ऊपर इतना चीज डाला है कि नीचे अगर रबर भी होता तो भी मैं खा लेता. लिटरली मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, प्लास्टिक, उसके ऊपर तो ऐसे Yeah. चीज डाल के मस्त गरम देगा, एंड सडनली ऑल योर वेजिटेबल्स आर गोइंग इन. The t-shirt katka jugaad. Now that is in me. I cannot let go of a t-shirt without turning it into a katka first. I have to do it. There's the jeans that becomes 3/4 that becomes shorts It just slowly reduces. as it loses color. Then it goes to its basic old form before it was dyed. How does jeans look before you put the indigo dye on it? As it starts becoming cotton again. Reverse aging. Okay, so I've got some jugadu scams, and it's just the level of ingenuity sometimes that is required to actually do something. So, how do you create a good scam? Okay, it's to prey on the fear that people have.
So these guys are called the Bunty Bubbly. Hmm. They are Bunty Bubbly people, and they are from Kanpur. So these guys have fooled old people and duped 35 crores from them by telling them that they have a machine that reverses aging. Oh, So they've gone to specifically old people, taken their life savings to, and Fuck. actually, when you grow old, what's the one thing you're like, अरे मेरा रिटायरमेंट सेविंग्स हो गया, सब कुछ हो गया, घर है, बच्चे सेटल्ड है, बस अगर थोड़े यंग होते, and they have hit the nail on the head. 35 crores. this is Brian Johnson. Yeah, and what they've said is they promised to make them young through an Israel made time machine. I don't know, oxygen therapy turning them into 25-year-old. This was their claim. Israel, an Israeli time machine. They said this is Israeli technology, and it is oxygen therapy that will make you 25 years younger. Oh, Wow. And they called a therapy center. They opened a therapy center called Revival World. And they opened an office properly where people were walking in. That was it's insane how much they and they offer, each session was 90,000 rupees. you have to spend money to steal money. Yeah. And on top of that, they were like, guys, it's actually 1 lakh rupees, but we are offering 10,000 rupees discount. So, so people are If you're over the age of 85 or 90, 10,000 rupee discount. Fuck. That's Dude, it's insane. There There should was- be a jugaad on how to stop scams. If somebody is there, ऐसा कुछ जुगाड़ करो कि Oh, there was. You know what they've done? The jugaad is this. So what they've done is they've created an AI that will Hmm. talk to scammers. Dude, it's so good. Ah. It's an old lady who sits and just talks to them. And they're like, you're So it's wasting my it's time, an- old lady. No, I'm sorry about that. And then she becomes genuine and Wow. apologizes and just wastes time. I think it's a Vodafone or a O2 या किसी का है, some If mobile anybody company. knows what AI application this is, tell me. क्योंकि मेरे फोन बंद ही नहीं हो रहे bro, तो मुझे चाहिए कोई. But can we customize? Can the old lady give galis? Yeah, No, that'll also be good. should just dial it. You know, it'll become that old lady कि सब मिलके हमें That Pakistani हाँ lady, no, who had gone, who was cussing the government. हाँ. Genuine feel. Okay, there's another Jugadu scam in Ahmedabad. This man called Manik Chowk in Ahmedabad was cheated out of 1.6 crores because somebody brought him 1.6 crore cash and took 2 kgs of gold from him. Wait, he was a jeweler or what? Yeah, so he was a jeweler and these guys said कि अरे sorry sir, हम cash transfer नहीं कर, sorry हम लोग ट्रांसफर में प्रॉब्लम हो रहा है, बैंक का ये इशू है, but we really want to buy it. तो बोलता है सर आप कैश ले लोगे? तो इसका ऐसा डॉलर साइन निकला होगा उस टाइम. इट्स लाइक चल कैश. तो ये लोग लेके आए हैं 1.6 crores कैश और इसको पकड़ा दिया है और ये लोग गोल्ड लेके गए हैं. And they had bought like really nice notes. Like it looked like bank se aaye, fresh and properly packaged and everything. So they've got 26 bundles of 500 rupees or something. And this guy was like very happy about it. And then they got the bundles back and they started think एक बार check कर लेते हैं. So they bought them and they opened the packaging. And it turned out that the notes were counterfeit and not normal counterfeit. It was very obviously a counterfeit. And if they just checked one thing, which is instead of Gandhi, it was Anupam Kher. That's hilarious. It says Reserve Bank of India. Wow. My God. How do you do something? Like if you're taking this amount of cash, एक बार देख लेना कि एक बार तो मैं बोला देखूंगा ना, तुमको उस पे कि- पूरा उसने एसबीआई का वो भी मारा हुआ है स्टैम्प वैम्प. Like it's just लेकिन bro, that's the thing with humans, right? Human brains are they sift out what is information that is not needed. For example, like तू कितने बार ना, if you read a paragraph और उसके बीच में there's a couple of words that have come back to back, like as an accident you've written, your mind cuts out that one even though it's there. You will not even notice it. That's So why ये proofreaders लोग get paid. हाँ
That's why proofreaders get paid. Yeah, exactly. क्योंकि उन लोग Yeah. देखते हैं बराबर. Somebody has opened this, देखा bald man गांधी जी Dude, it's बोल के आगे देख निकल. चश्मा भी नहीं पहनाया है कुछ भी नहीं. हाँ. There's no effort. There's zero effort. This is literally saying something to Anupam Uncle. उससे it's like कभी कभी it's like you're doing some it's हमारा कभी कभी फोटो कोई न्यूज आर्टिकल में आता है ना कि these people have just done a Google search Adar Malik and the first photo the worst photo of mine that has popped up and now that's the photo of the article. Crazy. Bro, like this हाँ sorry बोला कौतुक. No, I was just saying कि like the fact कि ये लोग ने एक दो ऊपर के नोट्स भी नहीं डाले कि हाँ. just to give it the illusion. Yeah. ना पहाड़ा और अरे अनुपम. कौन 1,000 रुपए वेस्ट करेगा चल 26 बंडल बनाने हम लोग को. But ये bro, खोसला मान का गया. ये This खोसला is का घपला है खोसला का हाँ. घपला. Bro, this is a fuck you from the scammers. Like they are not even they're like अपने इधर इतने चूतिए कि ये ले लेंगे और ले लिया ना गोल्ड ले लिया ना. हाँ हाँ लेके गए. Wow. I think Yeah. these were. I think what happened was when you do something like this, now when you're doing a cash transaction, the guy taking the cash is also in a bit of a अरे इतना cash क्यों ले रहा हूँ मैं तो उस they are taking advantage of that. It's all a ruse. Bro, I read an article, okay, where one dude, like he used to score drugs from a dealer. ठीक है. Now, you don't need to be a drug user or a dealer to know that this is an illegal operation. थोड़ा shady है, so nobody really has time to exchange product, take the money, count. Okay, this is good, high five, let's go. नहीं, everything happens very fast. So apparently, this one guy has scammed multiple dealers in Bombay. And then the reason came out because they all ratted him out. What this guy used to do is that he will call the dealer comes to take it. ऊपर के नोट रियल. दिस गाय वाजंट लाइक फक यू. ऊपर के थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए ऊपर 1,000 रुपए या 500 रुपए वर्थ इन डिफरेंट डिनोमिनेशन. सो द बंडल बिकम्स लिटिल थिकर. राइट. हाँ. सो यू लाइक ओ है आगे भी है पीछे भी है और उसने बीच में पैसे डाले उसको रोल करके ऐसे. डीलर आया लिया उसे सामान दिया उसको चले गए और फिर डीलर का नंबर ब्लॉक ऐसे सब किया. Then a bunch of dealers found out what this fucker was doing was putting actual currency और बीच में मोनोपोली. तो ये सारे 3-4 डीलर आए इकट्ठे and they got this guy caught. And there is no get out of jail. जेल का. But the fact that the dealers have become the heroes, it's just. सर पुलिस को सर ये आदमी को ड्रग्स चाहिए. अच्छा क्या कैसे पता चला आपको. नहीं मैं ही बेचता हूँ ना ड्रग्स. ब्रो अगर पूरे 5-6 डीलर को मिलना है 50-60 हजार 1 लाख और उनके हाथ में 1,200 रुपए है और मोनोपोली करेंसी है तो उन लोग तो बजाने ही वाले. By the way, sorry, just to criminal calling cop. So there was a scam going on, okay, recently. It's still going on actually, where these guys would call you pretending to be cops. हाँ. Okay? And they would say आपका कुछ लफड़ा है, पुलिस कंप्लेंट आई है, मैं एसीपी ये हूँ, Yes, yes, राइट. yes, आप yes. अभी मेरे सामने बैठिए और अपना बैंक अकाउंट खोलिए, ये खोलिए, वो खोलिए, and they used to take money out of it. This guy has caught another mark, called him up, right? And he's ready, this criminal. He's ready in his वर्दी with his this thing, background सब ACP बन के बैठा है और इसने फोन घुमाया. But the person who picked up was also a cop. Oh, तो जैसे ही वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ है, this guy is just he looks at the cop. अरे सर आप. And the cop is like, टेक्निकली तुमने मेरे सीनियर के कपड़े पहने हुए हैं तो मुझे तुमको सैल्यूट करना चाहिए. तुम्हारी क्यों फट गई मेरे से. तुम एसीपी हो ना. The cop is gone. देखो ऐसे नहीं करते हैं. अब हमारे पास आपका नंबर है, लोकेशन है, ये काम बंद कर दो, ठीक है. He has literally taken that tone. Wow. मजीद. और कुछ है जुगाड़. जुगाड़ तो हो गया. Now it's like now we're going into this super. Yeah. नहीं तो अपन इधर करते हैं. स्टॉप. क्विक रिमाइंडर टू एवरीबॉडी वाचिंग लिसनिंग. टिकट्स फॉर आवर शो टिस मां कसम are going to be live, or by the time this episode comes out will be live. We are in Bombay, Pune, Bangalore, Delhi and Gurgaon.
So please get the tickets. Please come for the shows. It's going to be a lot of fun. I have to clarify though. माँ कसम is is so here's the thing. We had Tis Bunkus. First, sorry, let me rewind. मत कर, This, मत कर, this मत कर. uncensored is over. Tis Bunkus was a trial show. From Tis Bunkus came out Tis Makasam. Tis Makasam it. is the new. That's it. Ma Kasam is the show, at least for the length of December. Ma Kasam is the show. You'll get to hear our personal stories, a whole bunch of them we haven't said on the podcast. Some may be true, some may not be true. You have to figure out what it is. With a twist, yes. Yeah, with a twist. It's going to be a lot of fun. So please get tickets and come watch the show. Yeah. Also, if These you are the have any other- last shows of the year, guys. These are the Yeah. last shows of the year. So, like, seriously, like, get the tickets now because we might just change the whole show again. हम लोगों अरे को भाई भरोसा नहीं, कंफ्यूज हम लोग मत कर सन मेरे की- भाई, हम लोग कंफ्यूज मत सन कर. की लोग हैं गाइस. नेक्स्ट ईयर कुछ और शो आ जाएगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. नहीं, प्लीज ये शो के लिए आओ. एंड इफ वी मिस्ड आउट ऑन एनी जुगाड्स इन दिस, लेट अस नो इन द Yeah. कमेंट्स. Send us links, put the jugaad, tell us what jugads you have done, so we can use it maybe in another episode or in our lives. But yeah, thank you so much for watching. We'll see you again next week. Until then, it's goodbye, take care, tata, salam ishq. तू शब्बा कैम नहीं बोलता है क्या? हाँ नहीं, शबा खैर शब्बा भी खैर बोलता good है. night है. हाँ. वैसे अच्छा, दिन में but शब्बा I खैर, realized अब public one बोलेगी thing, क्या? one thing that could have been great here was instead of doing Resolve Bank of India, it should have been Reserve Prank of India. Ah, That would be nicer. That would be a smarter Reserve Prank decision. of India is very good. Yeah. Dude, I don't think they need to write Reserve Bank, because if you have gotten away putting Anupam Kher instead of Gandhi ji, मतलब तू ultimate है भाई. But I agree with Adar कि they've not even photoshopped glasses on Anupam Kher. Yeah. And he's Like, looking the that's wrong direction. Bare minimum, man. Yeah. Dude, the jeweler has thought, अरे गांधी जी young ऐसे दिखते थे. Okay, okay, ये चश्मे के, like he is trying to justify ये in नए his वाले head नोट that है. that guy is Gandhi ji. ये नए वाले नोट है. ये साउथ अफ्रीका में जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब की फोटो है. अरे गांधी जी डीडीएलजे में थे. ओ कोकी, ओ कोका, ओ कोची, ओ लोला.